Okay, good afternoon, students. In the last class, we have discussed about the brain, so the different parts of the brain. So let me just revise that again. So you can see that there are four lobes in the brain. Okay, there are four lobes. That is the frontal lobe. This is the frontal lobe, which you will get only one. Then parietal lobe, which you will get two sides. Temporal lobe also two sides, and the last is occipital lobe. तो ये लोब्स ऑफ द ब्रेन पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक फ्रंटल लोब देखेंगे, दो पैराइटल लोब और दो टेम्पोरल लोब और एक ऑसिपिटल लोब. ठीक है, कुल मिला के चार लोब है. तो ऑल टुगेदर यू विल सी दैट देयर आर फोर लोब्स इन योर ब्रेन. अंडरस्टैंड? So the first, let us see the first lobe, that is a frontal lobe. So this frontal lobe helps you in what? The frontal lobe helps you in personality, behavior, emotions. Okay, how you behave, how you are as a person. So your personality and all it defines you with the help of this frontal lobe, okay, which is the first one. And the next function is judgment. Oh, sorry, behavior, like how you behave in front of your friends, family. So in that case, it helps you in that. Next is what? Emotions. You can control your emotions. In that way, it helps you in that frontal lobe. तो पहला क्या देखेंगे? पर्सनालिटी. तो तुम्हारा पर्सनालिटी ये फ्रंटल लोब के मदद की वजह से ये होता है. नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर. तुम कैसे बिहेव करते हो, ठीक है, कैसे बिहेव करते हो, तो ये सब फ्रंटल लोब की वजह से है. नेक्स्ट क्या है? इमोशंस. तुम मतलब इमोशंस कैसे वो संभालते हो, ठीक है, ये सब फ्रंटल लोब की वजह से होता है. नेक्स्ट क्या है? जजमेंट. ठीक है, ये सही है या गलत है, तो ये सब फ्रंटल लोब की वजह से पॉसिबल है. प्लानिंग. तुम मतलब यू प्लान समथिंग, okay, maybe what you will do tomorrow, what you will do after this, after that. So it helps you in that, and also it helps you in problem solving. Okay, is it clear everyone till here? Next is a speech. You can also speak something, you can also write something which is in your Broca's area, that is in your frontal lobe. Broca's area you will see here. So this area, so this is the Broca's area which is in your frontal lobe. So the Broca's area helps you in speaking, speech. तो ये Broca's area मतलब बोलने में मदद करता है, ठीक है. Next is what? Next is body movement. You are able to move your body, you are able to do physical activities because of your frontal lobe. कि मतलब जो काम करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रंटल लोब की मदद की वजह से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस मतलब पढ़ाई में भी बोलो, जो आप नॉलेज भी बोलो, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज एज वेल एज the outer knowledge, whatever you are having, so intelligence. Next is concentration. You are able to concentrate something, so because of the frontal lobe. And self-awareness means you are aware of something. You are mm, like aware of something will happen to you. So your frontal lobe help you in that. So next क्या है? मतलब concentrate कर सकते हो, मतलब होशियार होना, वो सब frontal lobe की वजह से है. Okay, did you understand about frontal lobe? Do you have any doubts? Next is occipital. So occipital lobe is here. So occipital lobe
it lies at your back. So occipital lobe helps you in interpret, vision, color, movements. You'll be able to know the difference in the vision. Okay, whatever like you do, whatever like you see, you will be able to differentiate it. Okay, you'll be able to even differentiate the color. You'll be able to even differentiate the light. You'll be able to even differentiate the light, the movement. So all these things you'll be able to know it. तो ये ऑसिपिटल लोब में हम लोग क्या देखेंगे ऑसिपिटल लोब में मतलब अलग अलग चीजें दिखाने मतलब दिखाई देगा जैसे कि कलर बोलो ठीक है मतलब ये ब्लैक है ये ब्लू है तो इसकी वजह से हम लोग को पता चल जाएगा और लाइट जैसे कि अंधेरा है ठीक है धूप है ये सब ऑसिपिटल लोब की वजह से पता चल जाएगा सो यू विल बी एबल टू नो it's dark or it's sunny. So with the help of this occipital lobe, you'll be able to know it. Next is movement. Okay, so in terms of movement of your body, not only your body, others' movement, you will also be able to know in that way. Okay, is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. Next is temporal lobe. This is a temporal lobe. So the temporal lobe helps you in what? The temporal lobe helps you in understanding language. Okay, you will be able to understand the language which is in your Wernicke's area. This one, which is in your temporal lobe, Wernicke's area. They helps you in what? Speech processing and understanding language means you will be able to speak something as well as you will be able to understand some other language also. तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे बोल भी पाओगे और जो भाषा है वो भाषा भी समझ में आ जाएगा ठीक है Next is memory. You will be able to memorize something with the help of this temporal lobe. तो ये next क्या है memory मतलब तुम याद कर पाओगे ठीक है याद रखने के लिए ये temporal lobe मदद करता है नेक्स्ट क्या है hearing मतलब सुनने के लिए ये temporal lobe मदद करता है लास्ट में क्या है sequencing and organization means you'll be able to do the things properly in a systematic way with the help of this temporal lobe. नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट मतलब चीज़ों को अच्छे से करना ठीक है चीज़ों को अच्छे से करना ये सब टेम्पोरल लोब की मदद की वजह से कर सकते हैं अच्छे से जैसे कि कुछ अरेंजमेंट करना बुक्स या जो जो भी ठीक है Okay, did you understand about temporal lobe? Yes, ma'am. Okay, is it clear, everyone? Frontal, parietal, temporal, occipital. Yes, Yes, clear na? Okay. ma'am. Huh. Please explain again parietal lobe. Parietal. Yes, ma'am. Okay, so this is the parietal lobe. Okay, this yellow color. So this is the parietal lobe. The parietal lobe helps you in what? The parietal lobe helps you in interprets language. Interprets language means what? Means, for example, I'm just saying one example. You will be able to understand what language? English, Hindi. It's not it. Even though I'm not speaking my mother tongue, but still, like you are able to understand what I'm saying. It's not it. Yes. Yes. So that Yes, one is ma'am. known as interprets language. Means like automatically it will just translate. So who helps you in that? The parietal lobe. Understand? The parietal lobe helps you in that. Okay. Next is sense of touch. You'll be able to know the touch of something. Okay, means like the temperature, pain.
if somebody beats you or if someone like hit you, so you will be able to know it with the help of whom? With the help of this parietal lobe. Sensory. Okay, it can sense something. Next is what? Interpret signals from vision. Means you will be able to know the thing. Okay, you will be able to know the thing or the vision with the help of this parietal lobe. Means I'm just saying an example. Like you came out from ATM. Say you came out from ATM with the cash in your hand. So one person is running towards you, is coming towards you. Yeah, that also in the middle of the night you can say, or else in a lonely road you can say. So what will come to your mind? What will come to your mind? अगर अगर तुम लोग मैं एक सिचुएशन देती हूँ तुम लोग को, ठीक है? तुम लोग एटीएम से आ रहे हो, मतलब पैसा लेके हाथ पे, और एक आदमी तुम लोग की तरफ आ रहा है, वो भी अ, एक सुनसान जगह पे, ठीक है, रात है, तो तुम्हारा दिमाग में क्या आएगा? पहला क्या आएगा दिमाग में? What will come in your mind first? Yes? Anyone? Anyone? बैग लेके भागना होगा वहां से। बैग लेके भागना पड़ेगा, क्यों? क्यों? कुछ नहीं तो पैसे ले जाएगा। हाँ, पैसे लेके जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो एक चोर है, ठीक है? Obviously that person wants something from you, that's why he's coming towards you. It's not it. So that one is known as interpret signals from vision. Okay, उसको बोलते हैं interpret signals from vision, मतलब देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा होगा. Understand? Means by seeing the scenario only, by seeing the whole scene, you'll be able to just know it. Yes, it will be in this way. Okay, did you understand? Interpret signals from vision, everyone? Yeah. Okay, so it means this. Okay, so next is what? Hearing, motor, sensory. So same thing, like you will be able to hear, you'll be able to what? You'll be able to move, you'll be able to sense something, you'll be able to memorize something with the help of this parietal lobe. Understand? Next is what? Spatial, visualing, and reasoning. So this spatial, visualizing, and reasoning is similar with this interpret signals from vision. ओके, तो ये स्पैचुअल विजन, विजुअलिंग एंड रीजनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब सेम ही है, इंटरप्रेट सिग्नल्स फ्रॉम विजन, मतलब देख के ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है. स्पैचुअल, visualizing and reasoning is almost similar to this third point. Okay, interpret signals from vision means you will be able to just know it. Okay, what will happen to the next part, what will happen in the next level, so you'll be able to just know it. Understand? Are you clear, everyone? Is it clear? Yes, ma'am. No doubts na now? थोड़ा सा No, डाउट है, ma'am. आप अच्छे से और एक बार समझा दीजिए ना. थोड़ा सा doubts कौन सा वाला में? यही वाला रिट्रीवल, हाँ, ये तुम आप जो पे भी समझा रहे हैं. तुम पे कौन सा वाला? इम्पोर्टेंट लेवल, पोर्टल लेवल लॉफ LOV. और फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब समझ में नहीं आया? हाँ, थोड़ा डाउट्स है. ओके ओके, frontal lobe. So this is your frontal lobe which lies at the front. Okay, so this frontal lobe helps you in what? It helps you in maintaining your personality.
your behavior, your emotions. Okay, personality like what? How you represent yourself. You know now from the names of personality, how you represent yourself from others to others, I mean. So it means that. And behavior means what? Means how you behave in front of others, how you behave in front of your friends. So all this is controlled by, or else the frontal lobe helps you in that. And even your emotions also, happy, sad. So all these things is done by frontal lobe. ओके, तो ये फ्रंटल लोब का पहला फंक्शन क्या है, पहला काम मतलब पर्सनालिटी, तुम कैसे मतलब ऐसे पर्सन कैसे हो, ठीक है, वो सब दिखाता है। और कैसे बर्ताव करते हो दूसरे आदमी के सामने। और इमोशंस इमोशंस जैसे कि तुम्हारा दुखी सुखी वो सब ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जजमेंट। Judgment whether it's correct or incorrect. If it is correct, why? What is the reason? If it is incorrect, what is the reason? So in that thing, the frontal lobe helps you in that. And planning, you are able to plan something. Maybe you have planned something like tonight or maybe tomorrow. Okay, so it helps you in that. Next is problem solving. It also helps you in solving the problems. Whatever problems comes to you, it helps you in that. It helps you in solving those things. Next is speech. Speaking and writing means you will be able to speak as well as you will be able to write. Okay, which is in the Broca's area, which you will find in the frontal lobe. So it helps you in that. You'll be able to speak as well as you will be able to write. And next is body movement. You will be able to move your body to different place, to different direction. So the frontal lobe helps you in that. Next is intelligence. Intelligence in terms of what, maybe in terms of your knowledge, maybe in terms of certain things which you are interested. And next is concentration. You are able to concentrate something because of frontal lobe. Next is self-awareness. You are aware of something, means you are what to say, means you'll protect yourself or else you will do something, okay, which is not good for you or else good for you. So in that way you are aware. तो पहला क्या है, नेक्स्ट क्या है, जजमेंट, मतलब सही है या गलत, अगर गलत है तो उसका कारण क्या है, अगर सही है तो उसका कारण क्या है। तो ये मतलब फ्रंटल लोब के मदद की वजह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग। तुम कुछ प्लान कर रहे हो आज रात या फिर कल परसों। और नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो प्रॉब्लम्स वगैरह वो सब सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पीच। तुम बोल सकते हो, तुम लिख सकते हो, वो उसको बोलते हैं ब्रोकर्स एरिया। तो ये सब क्यों होता है या हो रहा है, फ्रंटल लोब की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी मूवमेंट, मतलब तुम्हारा शरीर को मतलब हिला सकते हो, ठीक है। तो ये पैराइटल सॉरी, तो ये फ्रंटल लोब की वजह से है। नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब ज्ञानी होना, ठीक है, ज्ञानी होना उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेट कर सकते हो। और सेल्फ अवेयरनेस मतलब होशियारी होना, ठीक है, होशियार होना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है ना, अभी फ्रंटल लोब, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? मैम। एनी डाउट्स इन द लोब्स? कुछ प्रश्न? नो नो। So this is the area. This is the Broca's area, which is at the frontal, and this is Wernicke's area, which is at the temporal. Okay. Next is cranial nerves. So this cranial nerves
we usually write it with Roman letters. तो ये cranial nerves है, तो ये जो cranial nerves है हम लोग ज़्यादातर रोमन नंबर्स में लिखते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर हम लोग यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये जो रोमन के टाइम पे ये मतलब मिला था, तो उसकी वजह से रोमन नंबर में ये मतलब लिखा है। ये जो 1 2 3 जो न्यूमेरिकल नंबर है, ऐसे मत लिखो, ऐसे ऐसे लिखने से गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा रोमन नंबर। So you have to write it with the Roman number itself. Why? Because it was found out, or it was discovered, you can say, during the time when Roman numbers were still existing, was still there. Okay, if you write in the numerical number 1 2 3, it will be incorrect. You have to write with the Roman number 1 2 3. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So cranial nerves. So the cranial nerves are what? The cranial nerves are means the brain. Okay, so this is the brain. The brain, they will communicate with your body through the spinal cord and the 12 cranial parts. Okay, 12 cranial parts. This one. This is here is your spinal cord. So they will connect. ये cranial nerves क्या है? ये brain है, तो ये मतलब communicate करता है। ठीक है, यहाँ पे spinal nerves है, spinal cord है, तो ये जो 12 cranial nerves है, ये भी मदद करता है, सब एक साथ काम करके मदद करता है। ठीक है, कम्युनिकेट अच्छे से कम्युनिकेशन होने के लिए तो ये मदद करता है। समझ में आया? Did you understand? Yes, ma'am. Okay. तो फर्स्ट है olfactory nerve. पहला है olfactory nerve. The first one is olfactory nerve. The second is optic nerve. Third is oculomotor nerve. Fourth is trochlear nerve. Fifth is trigeminal nerves. Sixth is abduction nerves. Seventh is facial nerves. Eighth is vestibulocochlear nerves. Ninth is glossopharyngeal nerves. 10th is vagus nerves. 6th is spinal accessory nerves. Oh, sorry. 11th is spinal accessory nerves. Then 12th is hypoglossal nerves. Okay, is it clear? Ma'am. Okay, so the first one. So all the nerves, it has got various functions. तो ये सब nerve जो है उन लोग का अनेक अनेक काम है। ठीक है, so the first one you see olfactory nerves, it helps in smelling. तो ये olfactory nerves, इसका काम क्या है? ये सूंघने में मदद करता है, कुछ सूंघने की मतलब मदद करता है। So the first one, that is olfactory nerves, helps you in smelling something good, bad. Is it too much smelly or is it too much bad? So it helps you in that. Next is optic nerves. Optic nerves helps you in what? Sight, means seeing. Okay, it helps you in seeing something. तो नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ऑप्टिक नर्व मतलब देखने के लिए मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑक्यूलोमोटर नर्व. Oculomotor nerves helps you in what? Oculomotor nerves helps you in moving your eyes. That is your eyeball, which is your pupil, you can say. Oculomotor nerve का काम क्या है? Oculomotor nerve मतलब हम लोग जो आँख हिलाते हैं उसको हिलाने में मदद करता है। कौन सा वाला? आई बॉल, प्यूपल, इसको प्यूपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रोक्लियर नर्व्स. ट्रोक्लियर नर्व्स का काम क्या है? ट्रोक्लियर नर्व्स का काम मतलब आँख जो मसल एरिया है आँख का, वो हिलाने में मदद करता है। सो द नेक्स्ट वन,
that is the trochlear nerves, helps you in movement of your eyes. That is your muscle area. Okay, your muscle part. It helps you in that. Next is what? Next is trigeminal nerves. Trigeminal nerves helps you in what? Face and head sensation. Means if somebody slap you or if somebody hit you in your head or face, you'll be able to know it. तो नेक्स्ट क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व्स मतलब अगर कोई एक तुम्हारा सर या फिर तुम्हारा चेहरा पे थप्पड़ मारने से या चाटा मारने से तुम लोग को पता चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एब्डक्शन नर्व. एब्डक्शन नर्व मतलब उसका काम क्या है? मूव्स आई. ओके, ये आँख हिलाने में मदद करता है, मतलब ऊपर नीचे होने में मदद करता है. तो ये so abduction nerves helps in movement of your eyes, moving upwards, then moving downwards, moving sideways. Okay, so it helps you in that. Next is facial nerves. Facial nerves helps you in moving your face. Okay, moving your face like what? Facial expression. You do some facial expression. And also it also helps you in taste buds. Taste buds means it's in your tongue. Okay, you'll be able to know whether the thing which you're having is tasty, sweet, salty, spicy. तो ये फेशियल नर्व्स का काम क्या है? उसको फेशियल एक्सप्रेशन जो बनाते हैं हम लोग, ये वहाँ पे मदद करता है. और टेस्ट बड्स तुम्हारा जिबा पे है, जिब पे, टंग पे. ठीक है. तो ये जो तुम खा रहे हो, ये मीठा है या खट्टा है या बहुत तीखा है, वो सब मतलब पता चल जाता है फेशियल नर्व्स के मदद की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व्स. वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व्स का काम क्या है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व्स का मतलब उसका काम हियरिंग मतलब सुनने के लिए मदद करता है और बैलेंस भी करता है. तो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व्स helps in what? It also helps you in hearing as well as balancing it. Next is glossopharyngeal nerves. Glossopharyngeal nerves helps you in what? Taste, which is in your salivary glands. Okay, as well as you can swallow. Gag reflex means your esophagus will automatically open with the help of this glossopharyngeal nerves. तो ये glossopharyngeal nerves में क्या देखेंगे? टेस्ट. सेम थिंग मतलब खट्टा मीठा, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स पे है तो पता चल जाएगा. और जो तुम खाते हो वो घुल सकते हो अच्छे से, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की मदद की वजह से है. और गैग रिफ्लेक्स मतलब जो मतलब इसोफेगस जब खोलता है इसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स. नेक्स्ट है वेगस नर्व. वेगस नर्व्स helps you in what? Heart rate. It helps you in controlling your heart. Okay, cardiovascular system you can say. Also it helps you in digesting something. Whatever you eat, it helps you in that. नेक्स्ट है वेगस नर्व. वेगस नर्व का काम क्या है? वेगस नर्व का काम मतलब हार्ट अच्छे से फंक्शन होने के लिए मदद करता है और खाने जो हम लोग जो खाते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए भी मदद करता है. और नेक्स्ट क्या है? एक्सेसरी नर्व. एक्सेसरी नर्व मतलब वो माथा सर हिलाने के लिए मदद करता है. Accessory nerves helps you in what? Moving your head, okay, upside down, sidewise. And the last is hypoglossal nerves. The hypoglossal nerves helps you in what? Moving your tongue, okay, while speaking as well as while eating. तो this hypoglossal nerves का काम क्या है? ये मतलब टंग जिप है, जिब्बा है, उसको जब हम लोग बोलते हैं ये जिब्बा हिलाने के लिए मदद करता है. और जब हम लोग खाना खाते हैं या जो चीज़ खाते हैं हम लोग उस टाइम मदद करते हैं. ठीक है. समझ में आया? Did you understand everyone about the intracranial nerve? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Is it clear, everyone? No doubt, no? For today's class about the different groups of intracranial nerve.
No, ma'am. No, na? Okay. So how many cranial nerves do we have? Cranial And 12. nerves, 12. Okay. 12. We have to write in what numerical number? What number? Roman number. Haha. Roman number. Roman one. Okay. Okay, you have to write in that way. Okay. Okay then. That's all for today's class.